So next I am going to discuss some relationship, or I can say that an example where I have, you can say that, independent variable, and we have more than one independent variable, as I can say that this and this. And what we have to do is we have one dependent variable. That means this is the case here is basically the journal form of the multiple regression. I'm taking an example here that I have to find the travel time, or I can say that y, and these are the two independent variable. On the basis of these two independent variable, I found the travel time. And what are these? That means the miles travel and the number of deliveries. That means, or I can simply explain it in simple words, that हमें ट्रैवल टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है. तो ट्रैवल टाइम के लिए हमारे पास क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं कि कितने माइल्स जो हैं हम लोग ट्रैवल करेंगे कितने टाइम में, और जो है और ऑल्सो द नंबर ऑफ़ डिलीवरीज जो हैं वो भी डिपेंड करता है हमारे पास ट्रैवल टाइम के ऊपर. दैट मीन्स कि ये जो मेरे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों के दरमियान सम को रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है. मतलब ये दोनों एक दूसरे पे फर्दर डिपेंड करें कि मतलब अगर इसमें कोई चेंज आ रहा है इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास इस पे चेंज आएगा, और ये दोनों जो हैं कलेक्टिवली अफेक्ट करेंगे हमारे ट्रैवल टाइम को. So this is basically the relationship between these two independent variable. In the journal form, I can say it is a potential multi collinearity, as I discussed earlier. So this is basically the process of multiple regression. This is a many to one. Next we have if we have the multiple you can say relationship, that means I have two or more than two or more than two independent variable, and this independent variable results some dependent variable. That means if I have, you can say that, four independent variables, and these four, on the basis of these fours I got that result. That means some dependent variable. So if I have four, that means इंडिपेंडेंट वेरिएबल कि अगर मेरे पास जो है फोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों और वो एज अ रिज़ल्ट जो है मेरे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल दे रहे हैं, दैट मीन्स इसमें यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल आ सकती हैं. जैसे अगर मैं क्रॉप की बात करूँ तो क्रॉप पे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं. मतलब लैंड किस तरह का है, फर्टिलिटी किस तरह की है, वाटर अवेलेबिलिटी किस तरह की है, इन्वायरमेंट, वेदर, ईच एंड एवरी थिंग जो है वो हम डिपेंड करता है कि हमारे पास जो क्रॉप है वो किस तरह की हो रही है. तो यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास क्या है मिल के हमें क्या है सम प्रोडक्शन जो है वो दे रहे हैं. अब ये जो फैक्टर्स मैंने डिफ़ाइन किए, इन फैक्टर्स का आपस में रिलेशनशिप है. लाइक इन दोनों का आपस में मेरे पास सम रिलेशनशिप है, इन दोनों का रिलेशनशिप है, इन दोनों का है, इन दोनों का है, और फर्दर जो है इन दोनों का. मतलब ये तमाम मेरे पास क्या है पॉसिबल रिलेशनशिप है बिटवीन दीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो ओवरऑल मेरे पास यहाँ पे कितने 10 रिलेशनशिप्स जो हैं वो कंसिडर होंगे. सो दिस इज़ ए केस ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन. तो मल्टीपल रिग्रेशन जो है वो मैंने जैसा पहले भी बात की कि दिस इज़ कि ये मेरे पास कोई एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं देता, या ये बेटर नहीं है मेरे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन से. बट यहाँ पे मेरे पास कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ज़्यादा आ जाती हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज़ाहिर बात है जब बढ़ेंगे तो वो कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा आएंगी, क्योंकि वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे पे भी असरअंदाज हो रहे हैं. सो दैट मीन्स कि ये मुझे एक तरह से वेरिएशन के बारे में बता देता है कि अगर मैं ये फैक्टर रखूँ तो इससे मेरे पास रिज़ल्ट्स में या डिपेंडेंट वेरिएबल में किस तरह की वेरिएशन आ रही है, गुड और बैड आ रही है, ज़्यादा है या कम आ रही है, या जिस तरह से भी हो सकता है. ठीक है. तो दैट मीन्स
कि मेरे पास क्या है some independent variable, or I can say that the set of the independent variable are better at predicting the you can say the dependent variable than the others, and some contribute nothing. कि मतलब मेरे पास अगर बहुत सारे independent variables हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जो है वो सारे ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो मेरे पास प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि किस तरह का डिपेंडेंट वेरिएबल है. इसमें कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल पे, और कुछ इस तरह के होंगे कि वो अफेक्ट करें, स्ट्रॉन्गली अफेक्ट करेंगे मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल को. ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि this is basically the multiple you can say that example or journal example of the multiple regression. तो यहाँ पे अगर मैं further discuss करूँ that the multiple regression model की, तो multiple regression model की equation जो है वो मैं इस तरह से लिखूँगी, that is y equals to beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus up to so on beta p xp plus some error. This is some, I can say that this is some error. So this is the you can say that this is the equation for the multiple, I can say that multiple regression model. This is the equation of the multiple regression model. Next we have the equation of the multiple regression equation. So that is the estimate of y, that is beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus up to so on beta p xp. And here we have the error term is assumed to be 0. So this is the estimate of y, and this is the basically the multiple regression equation. And next we have the, I can say that the estimated, I can say multiple regression equation. I can write it as y cap, that is equals to beta naught plus beta 1 x1 plus b2 x2 plus up to so on bp xp. And here beta naught b1, this is b, and b2 and up to so on bp are the estimated value, of, I can say that, of beta naught, beta 1, beta 2 up to so on beta p. And y cap is basically the, I can say that the predicted value of the dependent variable. So these are the, you can say that these are the equations, these are the journal equations which we use in our previous examples. So I'm taking some example here, as we have example in the form of the y cap, that is 6.211, I can say that, plus 0.0 x1 plus 0.383 x2 minus 0.607 x3. So here we have x1, x2 and x3, these are the variables, and these values are basically the coefficients, and this is basically the value of the intercept. And as I can say that the equation for the estimated linear regression is b naught plus b1 x1 plus b2 x2 up to so on pp xp. So here is, this is the value of the b naught, this is the value of the b1, this is the value of the b2, and this is the value of the b3. So these are the estimates of the beta naught, beta 2 up to so on beta p, and y is the predicted value. So I'm going to review all the previous videos.
So here I discuss the multiple regression, which is basically the extension of the simple linear regression. And further I discuss here that if I add two or more independent variable I use to predict or explain the variance in one dependent variable. That means कि अगर मैं दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स जो हैं उनको यूज़ कर रही हूँ किसी भी चीज़ को प्रोडिक्ट करने के लिए या जो है वेरिएंस को एक्सप्लेन करने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो मैं उसके लिए क्या है टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का यूज़ कर रही हूँ. फर्दर है कि यहाँ पे हम लोगों ने ओवरफिटिंग की बात की और मल्टी कोलिनियरिटी की बात की थी. एंड फर्दर इज़ कि हमारे पास ओवरफिटिंग बेसिकली क्या है, इज़ कॉज बाय एडिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. दे अकाउंट फॉर मोर वेरिएंस बट ऐड नथिंग टू दी मॉडल. दैट मीन्स कि ओवरफिटिंग के अंदर मेरे पास क्या है कि मैं बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ऐड करती हूँ बट वो क्या है मेरे पास वेरिएंस जो है वो बताते हैं लेकिन मॉडल में कोई भी चेंज नहीं लेकर आते. एंड फर्दर है मल्टीपल कोलिनियरिटी. तो मल्टीपल कोलिनियरिटी हैपन्स व्हेन सम ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड विद ईच अदर. के हमने बात की कि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो उनके दरमियान अगर कुछ रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है या को रिलेटेड हैं अगर वो एक दूसरे के, सो दिस इज़ बेसिकली दी मल्टी कोलिनियरिटी. So I can say that in multiple regression, each coefficient is interpreted as the estimated change in y corresponding to a one unit change in the variable when all the other variables are held constant. So this is the, I can say that this is the whole concept about the multiple regression, and these are the equations for the estimated multiple regression, and these are the multiple regression equation, and this is the multiple regression model. And in the further video I am going to explain or I am going to find the multiple regression between I can say that uh, between two independent variables, and I also solve the example of this kind of multiple regression where I am using two independent variables.